Standard 3 Math Chapter number 12 Can we share Part 2 Textbook page number 167 How many shelves? I have 20 books. Okay, shelves. कबर्ड है, कबर्ड के अंदर बुक्स रखनी है. I can keep 5 books in one shelf. Okay, खानू. So, how many shelves do I need in my almara? Okay, once again, total books, total number of books, 20. We have 20 books and I can keep 5 books in one shelf. Okay, one shelf in 5. So, we will do here total 20 divide 20 by 5. एक शेल्फ्स के अंदर एक अलमारे के एक पार्ट में कितनी बुक्स करनी है? 5. व्हाट इज द आंसर? 5 के टेबल में 20 कब आता है? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 and 5 4 ज़ा 20. So answer is 4. So how many shelves do I need in my almara? I need 4 shelves. Okay. 5 books in the first shelf. Now 15 remain. Let's do here. Total 20 books. 20 में से 5 कट करो. First cell में 5. So we have remain 15. Then from 15 once again second part में 5 करो. So 15 minus 5 we have remain 10. Then 10 from 10 5 यहाँ रखेंगे. So how many remain? 5. और then 5 बाकी बची उसके यहाँ 5. So 0. So 1 2 3 4 4 parts हो गए 20 के 4 parts. Okay. Then like that they did. Okay. First shelf, second, third and fourth. So 20 books have filled up 4 shelves of the almara. So 20 books put into equal groups of 5 each take 4 shelves. 20 total books and into equal groups. Equal groups यानी कि हर एक shelves में 5 books है. Okay, equal groups and how many groups? 1 2 3 and 4 groups. Now let us try this. Here are 28 buttons. Green buttons you can see. Total 28 buttons we have. A tailor puts 4 buttons on one shirt. एक शर्ट के ऊपर कितने buttons लगाता है? 4. So now there are 7 shirts with buttons. Okay. Let's see here 7 shirts with the button. Total number 28. Total number 28. 28 को डिवाइड किससे करना है? 7 से और 4 से. नो प्रॉब्लम. यहाँ है एक शर्ट के अंदर कितने बटन्स है? 4. एक शर्ट के अंदर कितने बटन्स है? 4. सो 28 के एक शर्ट के अंदर 4 बटन्स है. 4 के टेबल में 28 कब आता है? 4 7 ज़ा 28. Another way also we can do that. If there are total 28 buttons and 7 shirt है, total 7 shirt. 7 shirt के अंदर equally लगाने हैं. Okay. So in each shirt how many buttons will come? Okay. Total numbers of buttons 28 and total shirts 7. So हर एक शर्ट के अंदर कितने buttons आएंगे? Equally distribute करने हैं. So divide 28 by 7. So 7 के टेबल में 28 कब आता है? 7 4 ज़ा 28. So both operation is correct. Okay. So this both way we can write. Here we can see and write. Divide 28 by 4 is equal to 7. If there are 28 buttons and the tailor put 7 buttons on each shirt. Okay. 7 buttons on each shirt. उल्टा कर दिया. Then there will be how many? We found there will be 4 shirts with the buttons and 28 divide 28 by 7 is equal to 4.
Okay. Next, practice time. 1 number. Minku puts her 15 laddus equally into 5 boxes. Total number of laddus 15 and equally among 5 boxes. टोटल नंबर ऑफ लड्डू 15 है और बॉक्सेस कितने हैं? 5 है. नंबर 1, हाउ मेनी लड्डूस विल देयर बी इन ईच बुक और ईच बॉक्स? एक बॉक्स में कितने हैं? टोटल 5 बॉक्स है. सो एक बॉक्स के अंदर कितने लड्डू रखेंगे? देयर विल बी हाउ मेनी डैश लड्डूस इन ईच बॉक्स. हाउ कैन वी फाइंड? ओके, 15 लड्डूस एंड 5 बॉक्सेस. 15 लड्डूस को 5 बॉक्सेस के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. सो 5 के टेबल में 15 कब आता है? 5 3s are 15. सो इन ईच बॉक्स हाउ मेनी लड्डूस? 3 लड्डूस. देयर विल बी 3 लड्डूस इन ईच बॉक्स. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. हो गए 15. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Yes. Second number, if she uses only 3 boxes, how many laddus will there be in each box? Okay, instead of 5 boxes, only 3 boxes if she will use, there will be dash laddus in each box. Let's do here. Total number of laddus 15. And कितने ग्रुप करने हैं? Only 3 groups, only 3 boxes. So 3 के टेबल में 15 कब आता है? 3 5s are 15. So there will be 5 laddus in each box. Okay. Both way we can write. 5 box है तो 3 लड्डूस आएंगे और 3 box है तो 5 लड्डूस आएंगे. Number 2. Practice time. Question number 2. Share 25 bananas among 5 monkeys. Total number of bananas 25 and monkeys 5. यानी कि ग्रुप कितने करने हैं? 5. टोटल है 25. How many bananas for each monkey? Okay. Here it is written. Total number we will write first 25. Why it is write 5? Because 5 ग्रुप है. 5 monkeys के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है. 5 के टेबल में 25 कब आता है? 5 5s are 25. So each monkey will get 5 banana. Each monkey has 5 bananas. Number 3. Share 12 balloons among 3 boys. Total balloons 12. And group कितने करने हैं? 3. It is written here. How many balloons for each boy? एक बॉय को कितने मिलेंगे? सो हाउ टू राइट? टोटल नंबर्स दैट वी विल राइट फर्स्ट. एंड ग्रुप कितने बनाने हैं? 3. 3 बॉयज आर देयर. डिवाइड 12 बाई 3. 12 के कितने पार्ट्स करने हैं? 3 पार्ट्स. वी हैव टू मेक 3 पार्ट्स ऑफ 12. सो डिवाइड 12 बाई 3. 3 के टेबल में 12 कब आता है? 3 4s are 12. सो आंसर Question is 4. Each boy has 4 balloons. Number 4. There are 21 candles. Total 21 candles. Put them equally in 3 boxes. Equally in 3 boxes. Total 21 candles. And कितने groups बनाने हैं? 3 groups. How many candles are there in each box? टोटल नंबर्स फर्स्ट. ग्रुप्स कितने बनाने हैं? 3. ओके, दिस इज वेरी सिंपल. नाउ यू ऑल कैन राइट इजीली. टोटल नंबर वी विल राइट फर्स्ट एंड कितने ग्रुप्स बनाने हैं दैट इज ऑल्सो गिवन. दैट इज द नेक्स्ट. ओके, टोटल 21 और उसके 3 पार्ट्स करने हैं. सो डिवाइड 21 बाई 3. सो इन 3's टेबल व्हेन 21 कम्स, सो 3 recite the table of 3 till 21. So 3 7s are 21. So we can say 7 candles are there in each box. Next, 5 number. There are 18 socks.
this total 18 socks. How many girls can wear these socks? Now little confusion. Second number तो नहीं दिया. Total 18 socks is given. 18 number socks given. But how many girls can wear these socks? Each girl has how many legs? Can you know? Do you know this one? Yes. One girl has how many legs? 2 legs. So एक गर्ल के 2 legs है. Okay. One girl has 2 legs and total 18 socks. So how many girls can wear these socks? 18 के कितने पार्ट्स करेंगे? ओके 18 के 2 पेयर्स कर दो. तो 2 के टेबल में 18 कब आता है? रिसाइट द टेबल ऑफ 2 till 18. So 2 9s are 18. We can say 9 girls can wear these socks. How many girls can wear these socks? 9 girls will wear these socks. Next question, question number 6. Raj has 36 minutes to make rotis. टोटल कितने मिनट्स है? 36 मिनट्स है रोटी बनाने के लिए. 1 roti takes 3 minutes. For 1 roti 3 minutes. टोटल 36 मिनट्स और एक रोटी के लिए 3 मिनट्स है. So divide 36 by 3. It is written here. How many rotis can he make in this time? 36 मिनट्स में कितनी रोटी बनेंगी? ओके 36 टोटल रोटीज है, टोटल मिनट्स है एंड एक के लिए 3 मिनट्स है. सो इन 36 मिनट्स हाउ मेनी रोटीज ही कैन मेक? सो रिसाइट द टेबल ऑफ 3 बट इट इज लिटल डिफिकल्ट. सो डू द डिविजन. डिवाइड 36 by 3. 3 1s are 3. 3 minus 3 0. 6 remain. 3 2s are 6. So 12 3s are 36. Right here he can make 12 rotis. How many rotis? 12 rotis he can make in this time. Next, question number 7. These are 24 footmarks of goats. Footprint है, footmarks है. So how many goats were there? How can you know? Can you know? Total footmarks is given 24. And goat दे दिया है. But how many goats were there? How can you know? Here, can you say something? Can you guess something? Yes. If there is nothing is given, find out that goat has how many legs? Each goat has 4 legs. Okay. One goat has 4 legs. Total 24 footmarks. So divide 24 by 4. Why we divide it by 4? Because one goat has 4 legs. Each has 4 legs and total 24 footmarks. So 24 के 4 पार्ट करो. Okay. एक ग्रुप में 4 करो तो कितने ग्रुप्स हो गए? हाउ मेनी ग्रुप्स? हाउ मेनी गोट्स विल बी देयर? ओके एक के अंदर 4 है तो 24 को 4 4 4 करो. 24 minus 4 once again जितने बचे उस -4. So how many groups will be there like that? So divide 24 by 4 in 4's table. When 24 comes, 4 6 are 24. So how many goats were there? Total 6 goats were there. Question number 8. Some girls are playing a game with both their hands. They are playing. The girls who are playing have 60 fingers all together. Some girls, number of girls are not given, but total numbers of fingers are given. How many girls are playing this game? How to know? Only one digit, one number is given, दूसरा number नहीं दिया है. So this time what we will do? Girl is given and hand is given. Okay, 60 fingers all together. So we know that total number 60. First we will write. Then one girl has how many hands?
वन गर्ल हैज़ 2 हैंड्स. ओके, 2 के पार्ट्स करेंगे. पहले 60 माइनस 2, देन 58 बाकी बचे, देन 58 माइनस 2 लाइक दिस. पहले किया था 60 माइनस 2. ओके, टोटल 60 फिंगर्स है. उसमें से sorry, it is about fingers. So one girl has how many fingers? 10 fingers. Okay, one girl has 10 fingers and total number of fingers 60 fingers. Okay, 60 fingers. and चलो पहले 10 fingers. one girl के कितनी fingers है? 10. so 60 minus 10 50. once again 50 बाकी बचे. 50 minus 10 40. 40 minus 10 30. 30 minus 10 20. 20 minus 10 10 and 10 minus 10 0. So कितने groups? 1 2 3 4 5 and 6. 6 girls are there. Once again let's come here. Total fingers 60 और दूसरा numbers तो नहीं दिया. So we can say girls. and किसकी बात की है? fingers की. each girl has 10 finger. okay? एक गर्ल के 10 fingers है. so how many girls are there? so 60 के 10 करके 60 में से 10 माइनस करो, 10 माइनस करो and groups बनाओ. so how many groups? 1 2 3 4 5 6 groups. right here 6. divide 60 by 10. 10 के टेबल में 60 कब आता है? 10 6 are 60. Number 9. Lakshmi has 27 kilogram potatoes to sell. Total 27 kilograms. 3 men came and bought equal amount of potatoes. Okay. 3 men. It is given the number 3 men. और equal distribute करने हैं. So each man bought dash kg of potato. सिंपल है. 27 टोटल किलोग्राम एंड 3 मैन के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो डिवाइड 27 बाई 3. वाई बाई 3? बिकॉज 3 मैन है, 3 ग्रुप बनाने हैं. वी हैव टू मेक 3 ग्रुप्स. 27 किलोग्राम के 3 ग्रुप्स बनाओ. ओके, सो 27 को 3 पार्ट्स में कन्वर्ट करने हैं. सो 3 के टेबल में 27 कब आता है? रिसाइड द टेबल ऑफ 3 till 27. 3 9s are 27. Each man bought 9 kilogram of potatoes. Next, jumpy animal. Jumpy animal. Next page number 173. Jumpy animals. A frog jumps 2 steps at a time. A squirrel jumps 3 steps at a time. A rabbit jumps 5 steps. A horse jumps 15 steps. A kangaroo jumps 30 steps. Use the path on the next page to find out one number. In how many jumps will the frog reach 30? Here, frog jumps 2 steps at a time. Okay. So, here on the next page, this path is given. Path is given. And frog jumps 2 steps at a time. Okay, so total how many jumps? 2 2 2. Okay, first, then second, third, fourth, fifth. So for that, one easy way we have total 30. Okay, to reach the 30 steps, total 30. and frog jumps 2 steps at a time. एक बार में 2 है. सो कितने जंप करेगा तो 30 तक पहुंचेगा. सो डिवाइड 30 बाई 2. 30 को 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना है. सो इक्वली डिवाइड करने के लिए डिवीजन. डिवाइड 30 बाई 2. सो हियर लेट्स डू डिवाइड 30 बाई 2. लिटिल हार्ड. यस. 30. टेक अ 30. देन डिवाइड बाई 2. Now first we will take 1 digit only because 3 is bigger than 2. 2 1s are 2. 2 2s are 4 is not possible because if we will write 4
then 3 minus 4 is possible? No, borrow करने पड़ेगा, but nothing is here, so it is not possible. So 2 1s are 2. 3 minus 2 1. अब किसका टर्न आया? 0 का. So that we will write here. Now which number we have? 10. Now in 2's table, when 10 comes, 2 5s are 10. 0 0. Okay. So how many steps? 15 steps. Number 2, in how many jumps will the squirrel reach 27? 27 तक पहुंचना है स्क्विरल को. ओके, सो 27 टोटल स्टेप्स एंड स्क्विरल यहाँ दिया है. ए स्क्विरल जम्प्स 3 स्टेप्स. सो डिवाइड 27 बाई 3. 27 को 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करने हैं. 3 9s are 27. So squirrel will take 9 jumps to reach 27. Number 3. Which number will the kangaroo reach in 2 jumps? Kangaroo takes 30 steps in 1 jump. Kangaroo takes, it is written, it is given here that kangaroo takes 30 steps in 1 jump. So it takes 2 jumps. Okay. It takes 2 jumps. Here they asked, read it carefully, that in 1 jump kangaroo jump 30 steps. Okay, एक बार में 30 स्टेप है, 2 टाइम 30 करने हैं. 2 टाइम्स मीन्स 32 3 2s are 6, 60. Number 4, who all will meet at the number 15? Who all will meet at the number 15? 15 के टेबल सर्च करना है. So on front page, see here, first frog 2 steps, squirrel 3 steps, rabbit 5 steps and horse jumps 15. Okay, now what we have to see, 15 नंबर के ऊपर कौन कौन से एनिमल्स आएंगे. So among 2 3 5 and 15. Okay, so 2 के टेबल में 15 आता है. 2 can divide by 15. 15 can divide by 2. No, because 15 is odd number and 2 is even number. So squirrel 15 के ऊपर jump नहीं करेगी. But frog will not jump on 15. But squirrel, yes, 3 5s are 15. 3 5s are 15. So squirrel can jump on 15. Then 5, yes, 5 3s are 15. So rabbit also can jump on 15 number. And horse का तो पहला स्टेप ही 15 है. फर्स्ट स्टेप में 15. So you can write squirrel, rabbit and horse can jump on 15. Here write rabbit, squirrel and horse. Number 5. Will the rabbit ever be at the number 18? Rabbit number 18 के ऊपर आएगा. Rabbit takes 5 steps in 1 jump. Rabbit takes 5 steps in 1 jump. So in 2 jumps, rabbit will reach at number 2. 2 5s are 10. And in 3 jumps, let's see here, rabbit takes 5 steps in 1 jump. So first jump 5 step. Second jump 5 के बाद 10. Then third jump 5 step लेगा, 10 से 5 step. So 50. 15 से 5 step 20. What is the question? Will the rabbit ever be at the number 18? Number 18 के ऊपर वो आएगा? No. So write here no. How many jumps of the rabbit equal on jump of the horse? Horse takes 15 steps in 1 jump and rabbit takes 5 steps. Okay, so 5, then 10 and 15. Before that only we did. So 15 jump के ऊपर कब आएगा rabbit? After 3 steps. 3 5s are 15. So thus horse takes 3 jumps to cover 15. Rabbit takes 3 jumps to cover 15 steps. So 3 jumps of rabbit is equal to 1 jump of the horse. How many jumps of the horse equal to 2 jumps of the kangaroo? A kangaroo takes 30 steps in 1 jump.
Kangaroo takes 30 steps in one jump. 30 steps one jump में करता है. Then steps covered by kangaroo in 2 jumps. Okay, 30 step एक में है, so 2 jumps में 60. Okay, horse takes 15 steps in one jump. 15 steps in one jump. Number of jumps taken by horse to cover 60 steps. क्या करेंगे? 6 divide 60 by 15. Because horse jumps 15 steps at once. And ये kangaroo 15 के टेबल में 60 कब आता है? 15 4s are 60. So horse takes 4 jumps to cover 60 steps. Horse takes 4 jumps. Number 8. Which is the smallest number where the frog and the squirrel will meet? Which is the small? Okay. Which is the small number where the frog and the squirrel will meet? A frog takes 2 steps in one jump. Frog takes 2 steps in one jump, and frog takes steps 2, 4, 6, 8. 2 jumps करो. Frog takes 2 jumps. So 2, then second jump 4, 6, 8, 10 and so on. Now squirrel takes 3 steps in one jump. 3 steps in one jump. So second step squirrel 6. 3 2s are 6. Then 3 stables, third jump 9, then 3 12, 15 and so on. So what is the question? Smallest number which the frog and the squirrel will meet. Which is the smallest? 6. So write here 6. Which term? At the 6th number, frog and the squirrel will meet.